Okay, so the next a very interesting thing is washing clothes. नाम सुन के you will very amazed कि बच्चे को हम इतनी छोटी एज में like in 3 to 4 years are we going to teach that about washing clothes? So yes, Montessori में we do teach them about how they have to wash the clothes. It's not about like the commonly the way we do in our homes, but एक normal proper apparatus होगा इसमें बच्चों को सिखाते हैं कि उसने कैसे उन proper procedure को follow करके he has to learn about cloth washing. ठीक है? So watch the video and then we'll discuss about the right purposes कि बच्चा जो है उससे क्या क्या चीज़ें सीख सकता है. Hi everyone, Miss Pam here today with a practical life lesson on washing clothes. So we have a few things set up here. First of all, I look in my bin and I see that I've got a lot of dirty clothes, so let me show you how to wash them. I put my apron on in case we get a little bit splashy and messy. Here's my pitcher of water. So you want to hold that with your 2 strong hands. And I'm going to pour a little bit into each of my basins. So some in the washing basin and some in the rinsing. Okay, I'm going to choose a piece of clothing, and we're using my doll clothing today. You can use anything you like, really. And you kind of press it into the water. So this part is really fun to get your hands wet. Turn it over on both sides. Get it nice and wet there. Can you see it dripping? Now I've got my washboard. So I'm going to lay my clothing down on the washboard. And here's my soap. Doesn't that make a cool sound? Almost like an instrument. So I get lots of soap on there. Now I'm going to scrub it up and down on my washboard. Scrubbing. Get some more water on there. This is how you get all the dirt out and any stains that you might have on your clothing. There we go. Oh, it's very drippy. Okay, I'm going to move this one aside and I'm going to move over to my rinsing station. So again, you want to get it nice and wet, get all the soap bubbles off. Get that dripping. And we're going to start at the top and we're going to slowly squeeze down the piece of clothing like that. So that's really good for your hand strength, practicing wringing things out. You can even wring it this way, like that. Get all that water out. Good. So that's going to go into my wet clothes bin. And while I've got my rinsing bowl here, I'm going to give my washboard a little rinse. You don't want the soap to be sitting on there. There you go. And if you make any drips, just make sure you have a cloth nearby so you can tidy up your workstation. Of course, we would go and dump our water into our sink, and then you can take your wet clothing outside to dry. Hang it up on the line. Thanks for joining me for this clothes washing lesson, friends. Okay, since you have watched the video, so I hope you must have learned कि जो है उसमें हमने किस तरह से बच्चों को जो है ना स्टेप बाय स्टेप इस सब चीज़ों को सिखाना है. इसका डायरेक्ट पर्पज़ ये है कि वी आर गोइंग टू हेल्प द चाइल्ड बिकम मोर इंडिपेंडेंट इन द केयरिंग फॉर हिज एनवायरनमेंट. ठीक है, वही बात है कि हम बच्चों के ये केयर फॉर एनवायरनमेंट के अंदर आ रहा है. इफ़ इज़ गोइंग टू ऑब्जर्व समथिंग डर्टी ऑन हिज क्लोथ और सम अदर क्लोथ्स, ही इज़ गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वॉशिंग दोज थिंग्स ऑन हिज ओन. ठीक है, बच्चे में देखिए फीलिंग आप क्रिएट कर रहे हैं कि अगर उसको पता है कि वो कैसे कर सकता है, सो येस ही इज़ गोइंग टू डू ऑल दीज थिंग्स ऑन हिज ओन, बट फॉलोइंग ऑल द स्पेसिफिक प्रोसीजर, ऑल द स्पेसिफिक स्टेप्स. और इसका इनडायरेक्ट पर्पज़ ये है कि बच्चे की वॉलंटरी मूवमेंट्स को आप बिल्डअप करें. ठीक है, देयर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, इनवॉलंटरी एंड वॉलंटरी. वॉलंटरी मीन्स कि जिन मूवमेंट्स को आप खुद इंटेंशनली करते हैं. ठीक है, बच्चा हर वक्त कपड़े अनइंटेंशनली नहीं धोता है. ठीक है, वो बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ होती है, बट वो एक्टिविटी कॉन्शियसली करता है. तो वो मूवमेंट्स जो कि बच्चा खुद करेगा अपने कॉन्शियस माइंड को जहन में रख के, उसको हम कहते हैं वॉलंटरी मूवमेंट्स. ठीक है, सो ये चीज़ उसके बिल्डअप होगी. बेसिकली आप मॉन्टेसरी में आप बच्चों की सब एक्टिविटीज़ के थ्रू आप उनकी वॉलंटरी मूवमेंट्स को ही बिल्डअप करें. ठीक है,
अच्छा, अब बच्चे के लिए इसमें इंटरेस्ट की बात क्या होगी कि बच्चा चेक करेगा, देखेगा कि जो डर्ट है वो कपड़े से कैसे जो है ना वहाँ से ख़त्म हुई है आफ्टर स्क्रबिंग इट, बिकॉज यू गोइंग टू टीच हिम हाउ ही हैज़ टू स्क्रब द क्लोथ। जैसे आपने वीडियो में देखा है, बच्चा उसको स्क्रब करेगा, ठीक है। एक तो उसके मसल्स स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं अगेन, ठीक है, ही इज़ बिकमिंग इंडिपेंडेंट, ही इज़ डूइंग द थिंग्स विद फुल कॉन्सेंट्रेशन, एंड सेकेंडली वो ऑब्जर्व कर रहा है कि पहले कपड़ा क्या था, उसके बाद में क्या हो गया, ठीक है। सो यू फील अ सेंस ऑफ अचीवमेंट दैट यस आई हैव डन दिस थिंग, और मैंने इसमें से इस डर्ट को रिमूव किया, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट